Hello everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and so far we have completed chapters on president, vice president, how to calculate the votes in the election of president. We have completed all these important chapters. Now today we are starting with one of the most easiest, simplest and very important chapter called Attorney General of India. When we study about the Union Executive, in the last lecture what did I tell you? Union Executive is covered from Article 52 to 78, and it basically covers the president, it covers the vice president, it covers the prime minister, the council of ministers, then it covers the Attorney General of India. These are the positions or posts in our government that the union executive covers. So today we have so far completed president, vice president. Today we are going to complete Attorney General of India. In the next lectures we will complete the prime minister and council of minister. Okay, so आज हम cover करने जा रहे हैं Attorney General. Now if you look at the book M Lakshmikant, from which we are actually covering these topics, in the book of M Lakshmikant, Attorney General of India is a chapter which is covered in just 1.5 page. That is why it's very easy to cover. But see, if you just cover it once and don't revise it, then you will forget it. It is a very short chapter, but if not revised properly, you are going to forget it. ठीक है, and that is my guarantee. ये तो मेरी गारंटी है कि अगर आप कवर कर लो आज ये चैप्टर, बट इसको रिवाइज बिल्कुल ना करो, तो अगर मैं एक हफ्ते बाद आपसे कुछ पूछूंगी तो आपको याद नहीं रहेगा. इसीलिए करना क्या है, वॉट एवर यू स्टडी, वॉट एवर नोट्स यू आर मेकिंग, मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग इट एज वेल. कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी नोट बना रहे हो, कोशिश करना कि उसको रोज रिवाइज करो. ऑलराइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वी नो दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 basically talks about this particular position, and this position is the office of Attorney General of India, and it is the highest law officer in the country. This is another important point that you have to underline. Highest law officer हमारी country का कौन है? Attorney General of India है. Attorney General is appointed by President. Another important point, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को. सो इफ अ पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, देन व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ अटॉर्नी जनरल? अगर किसी इंसान को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है अटॉर्नी जनरल की पोजीशन पे, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट क्वालिफिकेशन शुड बी he must be a person who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. कोई ऐसा इंसान जो कि इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है, और वो इतनी क्वालिफिकेशन हो उसके पास कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में भी अपॉइंट किया जा सके. ठीक है, नेक्स्ट इज ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन. किसी हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल के लिए वो जज होना ही चाहिए, और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years. तो दिस इज फोर्थ. एंड फिफ्थ वन इज और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट. या तो कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, मैम व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ अ ज्यूरिस्ट? ये ज्यूरिस्ट कौन होता है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, इट्स वेरी इजी. ज्यूरिस्ट मीन्स अ लॉयर और अ जज और एन एक्सपर्ट, और द राइटर ऑफ लॉ. या तो लॉ का एक्सपर्ट हो कोई, या लॉ का राइटर हो, या फिर जज हो. ठीक है, तो जज की क्वालिफिकेशन तो हमने देख ली, कम से कम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का जज हो, या एडवोकेट है हाई कोर्ट का तो 10 साल के लिए. ठीक है, और ज्यूरिस्ट दैट इज एक्सपर्ट इन लॉ. ठीक है, सो ओनली इफ यू हैव एन एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ लॉ, और यू हैव बीन एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 years, or you have been a judge in high court for 5 years, or you are a citizen of India is a mandatory qualification, or you have all the qualifications to get appointed as a Supreme Court judge. All these qualifications are required for you to be elected by the president as the Attorney General. Okay, so first thing we memorized is that Article 76 covers Attorney General. He is the highest, topmost law officer of the country. हमारे कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल. एंड देन वी स्टडीड द क्वालिफिकेशन. नाउ टर्म ऑफ ऑफिस, वी नो दैट प्रेसिडेंट के लिए 5 years होता है. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 years होता है, बट अटॉर्नी जनरल के केस में ना इट इज नॉट फिक्स. द टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड. व्हाई? बिकॉज हियर द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इज इन ऑफिस.
जब तक जो रूलिंग पार्टी है वो ऑफिस में है, गवर्नमेंट बनी हुई है उनकी, तब तक अटॉर्नी जनरल रहेगा। अगर वो नहीं, गवर्नमेंट हट जाती है तो अटॉर्नी जनरल भी चला जाता है, ठीक है। सो टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड, अंडरलाइन दिस, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डज नॉट कंटेन एनी प्रोसीजर और ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल, सो ही विल होल्ड ऑफिस एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस मीन्स दैट ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट at any time. Whenever you study this line that this position or this person at this post will hold office as per the pleasure of president, that means president has the power to remove him at any time. President का मन होगा तो वो remove कर सकता है। And he may also quit his office by submitting his resignation to the president. Why to the president? Because he is being appointed by the president. जो appoint करेगा उसी को तो resignation letter दोगे, ठीक है। मान लो अपॉइंट एक कंपनी ने किया, रेजिग्नेशन लेटर आप किसी और कंपनी को देकर आ रहे हो, ऐसे तो चलेगा नहीं, ठीक है। सो ही विल गिव हिज ही कैन आल्सो क्विट बाय गिविंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। ओके, नाउ कन्वेंशनली दिस इज नॉट by the constitution, but conventionally he resigns when the government, that is the council of ministers, resigns or is replaced, because he is appointed on the advice of council of minister. President works on the aid and advice of council of minister. We studied this very clearly in the last chapter. President के चैप्टर में पढ़ा था ना कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस से काम करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही इसको अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल को। तो कन्वेंशनली जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या तो रिप्लेस हो जाए या रिजाइन कर दे, तब ये अटॉर्नी जनरल भी अपना रेजिग्नेशन दे देता है। And the remuneration of attorney general is also not fixed by the constitution. He will receive such amount of remuneration as is determined by the president. So his term of office is not fixed in the constitution. The procedure of removal is not fixed in the constitution. He is appointed by president on the advice of council and minister for till the time when the president wants to keep him appointed. He can resign when the council of minister resigns or is replaced, and he receives the remuneration as per the pleasure of the president. ओके, पॉइंट क्लियर? यहां तक याद हो गए सारे पॉइंट्स, बहुत इजी थे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ड्यूटीज एंड फंक्शंस। नाउ आफ्टर दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू समराइज इट थ्रू द हैंडमेड नोट्स। ओके, सो प्लीज वॉच दिस लेक्चर टिल द वेरी एंड। अभी हम लेक्चर के एंड में ना हैंडमेड नोट्स के थ्रू इसको समराइज करेंगे, तो इस लेक्चर को ना लास्ट तक देखना, बिकॉज यू विल लर्न ओवर हियर that how you can make flow charts from a chapter. आप कैसे एक पेज का, आधे पेज का फ्लो चार्ट बना के अपने रिवीजन के लिए रख सकते हो, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो इसको एंड तक देखना। ओके, before we move ahead, here's a very important and quick announcement for all of you. See, Unacademy, I told you, has come up with a 20% का offer on Unacademy Plus subscription discount का offer. Now you can save up to 53%. कैसे? Here, if you are taking combo subscriptions on Unacademy Plus, combo subscriptions are the most famous subscriptions offered by Unacademy, wherein you get to prepare for prelims also, mains also, and your optional subjects also, plus test series, plus doubt clearing sessions, plus 20 GS books which will be delivered to your house, plus notes by educators, okay, and answer writing sessions. All of this, सब कुछ in just one subscription. आप एक subscription combo की लेंगे और आपको ये सारे benefits Unacademy Plus पर मिलेंगे. When you go to the offline coaching centers ना, you end up paying 2.5 to 3 lakhs for your preparation, but you can save that much amount of money, hard-earned money, on Unacademy Plus. So here you will see combo subscription pay. If you are taking a 12-month subscription now, Unacademy is going to give you 3-month extra free subscription extension. If you are taking an 18-month subscription, Unacademy will give you 6 months का free extension. अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 महीने के एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंडेड क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है आपके पैकेज के साथ, एंड जस्ट mere rupees over here you can say 55,000 में एक साल की तैयारी आप आराम से कर सकते हो। 3 महीने का एक्स्ट्रा आपको फ्री सब्सक्रिप्शन Unacademy देगा, एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट you will get if you use this code ARPITA10. This is one of a lifetime offer, but it is only till tonight. आज रात तक ही है, ये 11:59 PM तक ये ऑफर वैलिड है, तो मेक श्योर कि आप फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन आज के आज ले लीजिए, ठीक है, ताकि ये ऑफर का फायदा उठा सके। 55,000 में सारी तैयारी आपको बुक करवा के इधर दे ही जा रही है, और आपको पता है यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं हमारे Unacademy Plus पर। बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, फटाफट से आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ पर इफ यू आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल हर्डल, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर टू इंक्वायर अबाउट लोन फॉर UPSC CSE गिवन बाय Unacademy at 0% EMI।
So subscribe today. The links are given below. Do not forget to use code ARPITA10. Let's move forward. Duties and functions of the Attorney General. देखो, I told you that Attorney General is the highest law officer ना in India. So he is the chief law officer of the government. That you have to remember. ये government का chief law officer होता है. तो इसकी duties क्या होंगे? Whenever there is any case which has to be represented by the government in the court, ठीक है? When the government has to face the judges, who will go as a representative? The Attorney General. So Attorney General will give advice to the government of India upon legal matters which are referred to him by the president. Not all legal matters, only those which president refers to him. वही legal matters जो president attorney general को refer करेगा कि भाई इस matter में आप government को advice दो, सिर्फ उन्हीं matters में आकर ये advice देंगे अपनी. ठीक है, पहला पॉइंट. सेकंड, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो सभी ड्यूटीज जो लीगल नेचर की हैं, जो प्रेसिडेंट असाइन करता है अटॉर्नी जनरल को, उन सभी में अपनी ड्यूटीज निभाएंगे, उस सभी लीगल मैटर्स में अपनी ड्यूटीज निभाएंगे अटॉर्नी जनरल. थर्ड, टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी इनके ऊपर फंक्शन डिस्चार्ज करता है लीगल मैटर से रिलेटेड, लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड, ऑल दोस फंक्शंस विल बी डिस्चार्ज बाय द अटॉर्नी जनरल. सो फर्स्ट वी मेमोराइज्ड दैट ही विल गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन सच लीगल मैटर्स which are referred to him by the president. Second, he will perform such duties which are of legal nature assigned to him by the president. And third, all those other legal duties which are assigned to him by the constitution, he is going to perform them. Now, the president has assigned the following duties to attorney general. अब ये duties हैं जो president assign करता है attorney general को. First is that if there is any case that the government in which government has to present itself in front of the Supreme Court, so on behalf of government, who will go? Attorney General will go. He will appear on behalf of the Government of India in all cases in the Supreme Court. जहां भी Government of India concern में आती है, Supreme Court के सामने उन्हें प्रस्तुत होना है, तो Attorney General will represent them. Second, to represent Government of India in any reference made by President to Supreme Court under Article 143 of Constitution. If President has taken the reference of Article 143 in the Constitution, then government has to represent itself, Attorney General will go. What is Article 143? Article 143 authorizes President to seek opinion of Supreme Court in two categories of matters. दो categories होते हैं जिसमें Supreme Court का opinion Article 143 use करके President लेता है. First, on any question, this is question of law or fact of public importance. कोई भी ऐसा law या कोई भी ऐसा fact जो कि public importance से जुड़ा हुआ है, which is utmost importance from the perspective of citizens of India, those matters. Second, on any dispute arising out of any pre-constitution treaty or agreement, when the constitution came into existence. Before that, if there were any treaties or agreements signed by India or any with other nations or with between central government and state government, any dispute is arising on those treaties or agreements, then Supreme Court ki advice President will seek, and in that case Article 143, by using this article, President will send Attorney General to Supreme Court to represent government. Okay, point clear हो गया. And to appear in any high court in any case in which government of India is concerned. These are related. Supreme Court और high court में कोई भी ऐसा केस जिसमें government of India को अपने आप को present करना है, attorney general उनकी तरफ से जाएंगे. Okay. Now let us understand the rights and limitations of the duties and functions and powers of attorney general. So in the performance of his official duties, attorney general has first, this is very important, I am going to highlight it. मैं highlight करती हूँ. Right of audience in all courts in the territory of India. ठीक है, this is the first right that attorney general has, that he should have the right to audience. मतलब वहाँ audience प्रस्तुत होनी चाहिए, वो लेकर आ सकते हैं to see how he is representing and what are the facts that he is presenting. किसी भी कोर्ट में इंडिया के अंदर वो जहां भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ही हैज द राइट टू ऑडियंस. ऐसा नहीं है कि उनके वो जिस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑडियंस को वर्जित है, नहीं, ऑडियंस वर्जित है नहीं. Further, another important right, he has the right to speak and to take part in the proceedings of both House of Parliament or their joint sitting or of any committee of the Parliament of which he may be named a member, but he does not have the right to vote. So here, any proceeding of the Lok Sabha and Rajya Sabha in which he is the member, or any proceeding of the joint sitting of any committee in which he is the member, then he has the right to speak there. This.
वो अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज वहां प्रस्तुत कर सकते हैं, बट ही डज नॉट हैव अ राइट टू वोट। वो वोट नहीं कर सकते वहां पर, वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ही कैन स्पीक अप, ही कैन गिव हिज व्यू पॉइंट, प्रेजेंटेड हिज ओपिनियन, बट ही कैन नॉट वोट। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज दैट ही हैज, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही इंजॉयज ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर को जो इम्यूनिटीज और जो प्रिविलेजेस दी जाती है ना, वही इनको भी दी जाती है, अटॉर्नी जनरल को भी दी जाती है। दीज आर दी राइट्स, these are the 3 rights of attorney general. Okay, now let us understand the limitations. अब हम limitations पढ़ लेते हैं. Now there are certain limitations on the position of attorney general also. ठीक है, first is he should not advise or hold a brief against the government of India. गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एडवाइस किसी को नहीं दे सकते, ना ही कोई ब्रीफ मीटिंग या कोई ब्रीफ स्पीच अपनी कुछ प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, नहीं. He is not allowed to do so. Why? Because he is representing the government of India. He has been given that post to represent government of India, to give government of India the advices, right, that the government requires. So he cannot go against it. Second, he should not advise or hold a brief in cases in which he is called upon to advise or appear for the government of India. Now, in those cases where he has to give his advice to government of India, okay, in those cases he cannot talk about them, or conduct a brief about them openly, because he has been exclusively called to advise the government of India only. Okay, तो उन जिस केसेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो काम कर रहे हैं, उस पे बाहर किसी को एडवाइस देना उनको अलाउड नहीं है, या कोई भी मीटिंग या ब्रीफ कंडक्ट करना उन्हें अलाउड नहीं है. All right, because his duty is to give his advice exclusively to the government of India. Third limitation, he should not defend accused persons in criminal prosecutions without permission of government of India. Now, it is not being written that he cannot, defend the accused involved in the criminal prosecutions. It is just written that he cannot do that without government of India's, permission. तो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो किसी को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डिफेंड नहीं कर सकते. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि वो कर ही नहीं सकते किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड. इसमें लिखा है परमिशन के बिना नहीं कर सकते. Then fourth, he should not accept appointment as a director in any company or corporation without permission of government of India. Again, permission is required. If he wants to be appointed as a director in any company or corporation, he cannot do so without government of India's permission. And fifth, he should not advise any ministry or department of government of India or any statutory organization or PSU unless, this point is important, unless proposal or a reference is basically received through the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs. So he has to get reference through the President, through the Department of Legal Affairs, only then he can advise the government. एडवाइस भी अपने मन से उठकर जाकर नहीं देकर आ सकते गवर्नमेंट को, जब तक डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स या प्रेसिडेंट उनको रेकमेंड ना करे या फिर रेफरेंस ना दे कि भाई आपको यहाँ पर आकर एडवाइस देनी है. व्हेन ही इज आस्क्ड टू डू सो, देन ही कैन गिव हिज एडवाइस. पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से ही हमें समझ आ गया था कि रेफरेंस हैज टू बी मेड टू हिम, ओनली देन ही कैन कम एंड गिव हिज एडवाइस. So attorney general is not a full-time counsel. That so far आपको ये बात समझ ही आ गई होगी. So far you must have understood it that attorney general का office is not full-time office or full-time job. He does not fall in the category of government servant. That is why his remuneration is also not prescribed by the constitution. That is why his term of office is not prescribed by the constitution, because ये government servant की position में आते ही नहीं है. But also, this is another important point and very easy, useful point. He is not debarred from private legal practice. He can do it because full-time counsel थोड़ी है वो. He is not a full-time counsel, so he can do his private legal practice also. Okay, point clear? And then there is a position of Solicitor General. This you must have read in the newspaper as well. आपने newspaper में पढ़ा होगा. Do you know that Solicitor General, this particular office, it is not mentioned in Article 76 or our Constitution. He is just to help the Attorney General. अटॉर्नी जनरल को बस हेल्प करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, to help him fulfill his official responsibilities. But this office is not created by the constitution. ठीक है, that you have to remember. It should be noted here that only the office of attorney general is created by constitution, not the office of solicitor general. Okay, and attorney general is also not a member of the central cabinet. That you have to remember. So Article 76 deals with Attorney General.
Article 88 talks about the rights of attorney general, and 105 article talks about the powers, privileges and immunities of attorney general. Now let us revise the chapter. Revise कर लेते हैं chapter को. So we studied that attorney general's office is covered in article 76. Okay, solicitor general is not covered in the constitution. He is appointed by the president on the advice of council of minister. There is no fixed remuneration for attorney general, no fixed term of office. Qualifications are he should be a citizen of India, he should be an eminent jurist or advocate of High Court for 10 years, or advocate the judge of High Court for 5 years, okay, or a person who is qualified to be a judge of Supreme Court. He is the chief law officer of Government of India because he gives advice to Government of India on legal matters which are referred to him by President. He can discharge the functions conferred to him by the Constitution. Okay. Then there are certain duties of Attorney General. First is to appear on behalf of Government of India in front of High Court or Supreme Court, to represent government in all cases in Supreme Court when Article 143 is used by the President. Article 143, what is it? When there are two matters on which President needs the advice of or opinion of Supreme Court, and those matters are, first matter is the pre-constitution treaty or agreements, ठीक है, and second matter is if there is any particular question of law which involves public importance. Okay, these are the two matters. He can do private legal just practice. He is not a government servant. He is not a full-time counsel for government, and he is not a member of central cabinet. All right. Then Attorney General is assisted by Solicitor and Additional Solicitor General of India. These two offices are not created by the Constitution. Then let us understand this. He can resign when government resigns or is replaced. He is the highest law officer in country. There are no procedure of grounds of removal of Attorney General. He also can quit by giving his resignation to President. And we studied the rights, right of audience in all courts in the territory of India, right to speak in the proceedings of Lok Sabha, Rajya Sabha, or the joint sittings of the committee of parliament, and जिसके वो member हैं, जिनके member हैं, उन्हीं sittings में ये पार्टी बोल सकते हैं, but he cannot vote. Okay, and he has the privileges which the member of parliament has. All right, so this is how we have summarize the entire chapter in just one page. एक पेज में हमने पूरे चैप्टर को summarize कर दिया. This is how you have to study M. Lakshmikant. इस तरीके से M. Lakshmikant आपको पढ़नी है. But do not forget to revise. Okay?